Check 1, 2, 3. Okay. Yeah. Go live. Okay, guys. Please confirm audio video. Audio video. Please confirm audio video. Am I audible? Is video visible clearly? Confirm in the chat box, guys, before we start. Okay, so let us start, guys. So in the afternoon session today we discussed percentages concepts. Okay, all the concepts which are required to solve the problems on percentages that we have already discussed in the previous video. Well, if you did not watch that video, guys, make sure please watch that video. That is very important video for all the basic concepts of percentages. Yeah, so in this video we will be solving only the problems, that to completely previous year problems of SSC, both from CGL as well as CHSL. So on the every question we will display that question is from which paper. Okay, so let us get started with the very first question. Okay, and the material which I have already posted in the Telegram channel. Apart from that, if you don't have that, in the description there is a link to download the material. That is also already provided. If you want, you can download the video through material through that link, people. Anyways, for now I'm gonna post the questions here itself on the board. You can read it here itself. Okay, so later on if you want for further solving, you can use the link or to download the material there. Yeah, so let us get started, guys. So first question, please. Yes, what do we have? What will be the net discount after two successive discounts of 40% and 20%? This is from SSC Sub Inspector 2017 paper. Okay, so what will be the net discount in two successive discounts of 40% and 20%? Well, this is based on successive percentages. Why? Because two successive discounts are given. Okay, what do you mean by successive percentage? If more than one percentage is applied on the same number, then we call them successive percentages. So how do we solve this? Let us see. Question number 1. Let us assume our original price is 100. Two discounts of 40% and 20%. It means originally price is reduced by 40%. What is 40% of 100? 40. I'll reduce it by 40. What do I get? 60. On this again there is another discount of 20%. So we will reduce it by 20%. Okay, what is 10% of this? 6. 10% 6. 20% 12. So if I reduce this by 12, what do I get? 50, 48 I'll get 48, guys. Okay, now what is happening here? What is happening? Original price 100 rupees. After two discounts, final price 48. We need to calculate percentage change. How do we calculate percentage change? Change in value divided by original value into 100. What is change in value? Here to here. Number reduced by 52. 52 out of which value? Change in value by original value is 100. Okay, so what is 52 out of 100? Which is 52%. So the combined discount, overall discount of two successive discounts, 40% and 20%, is 52%. What is the other way of solving the question? We can solve this using the formula x plus y plus xy by 100. xy by 100. Okay, now let us see. What is x value? Minus 40, because this is decrease. Y value minus 20 because decrease. X value minus 40. Y value minus 20, minus into minus, plus 40 into 20, 800. 800 by 100, 8. What do we have here? Minus 60 plus 8. That represents minus 52. Minus represents a decrease. So overall decrease is 52%. So if you know this discounts problem is based on successive percentage and you know its formula, you can solve this question within 10 seconds. Within 10 seconds. So that's why I told you
concepts are very important. We have discussed the concepts in the previous class. Okay, if you are clear with the concepts, this problem can be solved within 5 to 10 seconds, guys. Right? Am I clear with the question number 1? Everybody, confirm please. Am I clear with the question number 1? Respond, guys. Respond. Did you understand this question number 1? Tell me yes or no in the chat box, please. Okay. चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन वीडियो प्लीज। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, व्हाट डज इट से? एन आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% बिफोर बीइंग सोल्ड। इफ द मार्केट प्राइस इज 800 देन द सेलिंग प्राइस इज। तो मतलब क्या है, एक आर्टिकल का प्राइस है 800 रुपीज, तो उस पे 2 डिस्काउंट्स दिए गया है इधर। तो क्या क्या है डिस्काउंट? एक 10% है, दूसरा 5% है। तो ये दोनों डिस्काउंट के बाद वो सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो है हमारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, मार्केट प्राइस है 800 रुपीज, तो इसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिया हुआ है। पहला वाला 10%, मतलब इसको 10% कम करना। तो 10% ऑफ 800 क्या हुआ? 80। चलो इसको 80 कम करते हैं, तो क्या बचा? 72। अब फिर से 5% डिस्काउंट हुआ, 5% डिस्काउंट। ओके, तो इसका 10% क्या होता है? 7.2, सॉरी 720 इट इज, 720 इट इज, 800 माइनस 80 720। तो इसको अभी फिर से 5% कम करना है। 5% कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10% डिवाइडेड बाई 2। इसका 10% होगा 72, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 36 मिलेगा। तो इसको फिर से 36 कम करना है। सो व्हेन आई रिड्यूस इट 36, आई विल गेट इट एज 684। बन गया हमारा न्यू आंसर। ये है सेलिंग प्राइस और ये है मार्केट प्राइस। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 800 मार्क, सिमिलर क्वेश्चन, इधर सिर्फ टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है, लेकिन इधर क्या पूछ रहा है? मार्केट प्राइस देके 2% दिया हुआ है, 2 डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, बस उतना ही है प्रॉब्लम। और दूसरे तरीका, ये मेथड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। इस मेथड में कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली वी कैन सॉल्व इट इन 3 डिफरेंट टाइप्स। मैं सारे मेथड दिखाता हूं आपको ना। ऑब्जर्व, ये है एक्स वैल्यू और ये है वाई वैल्यू। ओके, तो एक्स का एक्स वैल्यू क्या है? -10। y वैल्यू क्या हुआ? -5। माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 5 50, 50 बाय 100 0.5, 10 इंटू 5 50, 50 बाय 100 0.5। तो क्या हुआ? ये -15 प्लस 0.5 बोले तो -14.5। तो इसका मतलब टोटल डिस्काउंट हुआ 14.5%, 14.5%। सो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग 2, you can decrease it by 14.5% डायरेक्टली। तो लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। और एक मेथड होगा, देखो ये 800 को 100% 800 समझो। ओके, दिस इज 100% ऑफ 800, उसमें से 14.5% डिस्काउंट देना है। व्हेन आई गिव 14.5% डिस्काउंट ऑन 800, लेफ्ट ओवर प्राइस विल बी 85.5% ऑफ 800। When I do this, still I'll get the answer. चलो देखते हैं। परसेंटेज 00 कैंसिल हो जाता है, क्यों? 85.5 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, 100 00 कैंसिल। सो दिस वन 8 into 80 640, 8 into 5 40 680, 8 into 0.4 0.5 4, so 684 बन गया मेरा आंसर। This is one way of solving the question. Now this is the easiest one, this is the easiest one, but this is also one another method. और एक मेथड में भी कर सकते हैं, चलो देखो वो भी देखते हैं, because these are the initial problems. I am trying to show you all the different methods, people, right, so that you can decide which is the better method.
So later on in the coming problems, we'll be solving with only one method, the best method. Okay, चलो. So तीसरा method, यार ओरिजिनल प्राइस है 800, ठीक है, इसको समझो 100% ऑफ 800, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है इस पे, पहले 10%, तो इसमें से जब 10% कम करते हैं तो इसका प्राइस बचेगा अभी 90%, 90% ऑफ 800 बचता है. On this again 5% discount is given. Now consider this as completely 100%. On this 5% discount is given means the remaining part is 95%. So this is the final price left over. पहले 10% कम किए, इसके बाद 5% कम किए. When you do this, you'll get the same answer. देखते, ये हो गया 95/100, तो ये हो गया 90/100 of 800. 000000 गया. ओके, अब ये 10 ऐसा ही रहने दो. चाहिए तो ये कर सकते हैं फिर से 5 into 2, 5 into 19, 2 into 1, 2 into 4. ओके, तो क्या हुआ, 19 into 4, 19 into 4 is how much, 76. अभी कितना बचा है, into 9, 9 into 76, 30, 9 into 6, 54, 630 plus 54, 684. Even this method will also give us the same answer. Okay, but the best method among this is this. For this question, ऐसा नहीं है कि हर बार यही मेथड पे चलता है, तो सामने देखते हैं. In few questions this method doesn't work at all, but this method will work everywhere. In this question it is slightly complicated, but in some other questions you have to use only this method, no other method can work. चलो वो भी देखते हैं. Am I clear with the question number 2, everybody? Am I clear with question number 2? Did you understand? Confirm in the chat box, guys, before we go to the third question. Please confirm. Is it clear? Okay, let us start. Question number 3. Question number 3. What do we have? In question number 3, we have an article is sold for rupees 528. One second. Let me divide the board clearly so that it will be understandable for you. Do not copy anything, guys. I'll give you time for you to copy. Okay, don't copy anything. Just listen to me. Question number 3. क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, an article is sold at rupees 528 after 2 successive discounts of 20% and 12%. देखो सारे क्वेश्चन सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर है, तो ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का है, 2018 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये. तो क्या पूछ रहा है, an article is sold at 528 after successive discounts of 20% and 12%. What is the market price of the article? देखो इस बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लेकिन मार्केट प्राइस पूछ रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस क्वेश्चन. तो पहले मार्केट प्राइस था, इसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिए, एक गया 20%, दूसरा हुआ 12%. तो ये दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस मिलता है, वो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया गया 528. तो अभी रिवर्स पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो मैंने सुबह का क्लास में बताया था आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं चलता है इधर. तो कई लोग सोचते हैं यही नंबर को 12% इंक्रीज करते हैं और 20% इंक्रीज करते हैं, मार्केट प्राइस मिल जाएगा. नहीं मिलेगा. रिवर्स इंजीनियरिंग डज नॉट वर्क. देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू गो विद दिस मेथड और दिस मेथड. तो पहला मेथड काम नहीं करेगा इस वाला क्वेश्चन में. सो व्हाट डू वी डू, लेट अस गो विद द थर्ड मेथड डायरेक्टली हियर, दिस मेथड. देखो पहले आई डोंट नो व्हाट इज मार्केट प्राइस, लेट मी अज्यूम माय मार्केट प्राइस एज एमपी. ओके, इसके ऊपर पहले 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, so it means it is reduced by 20%. अभी कितना बचेगा, 80% of market price बचता है. Now this is the new price after the first discount. Now after this another discount of 12% is given. अभी समझो ये पूरा नंबर को 100%, एक कुछ नया नंबर है, तो ये नंबर के ऊपर 12% डिस्काउंट दिया हुआ है. It means I have to reduce it by 12%. इसको समझो 100% है, इसमें जब 12% डिस्काउंट देते हैं अभी कितना बचेगा, 88%. So 88% of 8% of market price. This will be our selling price. दोनों डिस्काउंट के बाद इतना बचना है, ये है हमारा सेलिंग प्राइस. Now in the question selling price is already given, that is 528. So this is equal to 528. I am repeating it one more time. Let us assume market price as MP.
it is decreased by 20%. It means leftover part will be 80% of market price. On this again discount of 12% is given. On this complete, this is a new number. On this 12% discount is given means still 88% of this part will be left out. क्योंकि इसको 100% समझना है, उसमें से 12% जब कम करते हैं अभी बचेगा 88%. तो ये हो गया हमारा नया प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है ये. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 528, तो दोनों को इक्वेट करना है. तो क्या करना है अभी, ये देखो 88/100 इंटू, मैं इसको सीधा लिखता हूं 4/5. 80% होगा 4/5. कैसे, 80/100, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 5 100, तो 4/5 हो गया. अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, जब 1/4, लेट मी राइट इट हियर, 1/4 20% होता है, 2/4 सॉरी 1/5 20% होगा, 2/5 आके 40% होगा, 3/5 60%, एंड फाइनली 4/5 इज 80%. तो फिर से 5/5 1 हो गया, वो तो 100%. ओके, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज वैल्यूज एज वेल. तो क्या कर सकते हैं इधर, चलो देखते हैं. ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल टू 528, तो इसको 8 से कैंसिल करता हूं, 8 इंटू 11 में हो गया. तो इसको 8 इंटू 648, 8 इंटू 648, 11 इंटू 1 11 इंटू 6, ओके, 4 इंटू 1 4 इंटू 25, 25 इंटू 5 इज 125. जब 125 को इस तरफ भेजता हूं वो बन गया 6 इंटू 125, तो क्या हुआ 600 750. ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस. 6 into 125 is 750. Do we have the option? Yes. Option number C is our final answer. Okay. तो एग्जाम में क्या करना है यार, ये सब मत लिखना है, ये तो बहुत लंबा दिखता है. जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं पहले मार्केट प्राइस एमपी. देखो एग्जाम में कैसा लिखना है, इसको सीधा एक स्टेप में लिखना है. पूरा मार्केट प्राइस है 20% कम हुआ, इसका मतलब अभी 80% बचता है, 80% को सीधा 4/5 लिखना. उसके बाद 12% कम करते हैं पूरा वैल्यू को, तो बचेगा 88%, इसको सीधा लिखना है 88/100, दैट इक्वल टू सेलिंग प्राइस 528. तो ये सिंगल स्टेप में पूरा कैंसिलेशन खत्म हो जाना चाहिए. तो ये सभी नहीं लिखने का. आई एम राइटिंग ऑल दिस क्रैप ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. इन द एग्जाम यू हैव टू राइट ओनली दिस स्टेप एंड फिनिश द कैंसिलेशन हियर. 15 सेकंड में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस पीपल. Okay, so copy these things and then we shall go to question number 4. फातिमा लिसन, why 88 comes? देखो पहला स्टेप में 20% जब डिस्काउंट देते हैं, मार्केट प्राइस को 100% समझो. 100% मार्केट प्राइस में 20% कम करते हैं. ओके ओके, लिसन, 80% ऑफ मार्केट प्राइस बचाए 20% डिस्काउंट देने के बाद. अब ये जो नंबर है ना 80% ऑफ मार्केट प्राइस, इसको एक नया नंबर समझो. 80% ऑफ मार्केट प्राइस, ये पूरा नंबर को 100% समझो. ओके, वो 100% के ऊपर 12% डिस्काउंट. जब 100% में 12% कम करते तो कितना बचेगा, 88%. Am I clear, Fatima? Are you able to understand this? Did you get this, buddy? Let me know. Or shall I repeat again? Okay, buddy. Perfect.
Shall we continue? Shall we continue? Done with the copying? Yeah. Okay, guys. Let us start. Next question, please. Question number 4. Question number 4. What do we have? An article is sold for rupees 288 after two successive discounts of 25% and X%. If the market price is 480, what is the value of X? Once again, discount question is slightly different variation. So what is happening? An article is sold for 288. So it means we have here selling price of article as a 288. Okay. And two successive discounts of 25% and X%. If the market price of the article is 480, what is the value of X? Okay, observe. Market price भी दिया हुआ है 480. Okay, market price is 480. So yeah, okay. So first 25% डिस्काउंट, तो उसके बाद X% डिस्काउंट. अब ये दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो हो गया 288. दैट इज 288. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज दिस X%. प्रीटी सिंपल. ऑब्जर्व. सो पहले 25% डिस्काउंट, मार्केट प्राइस को 25% कम करना, तो इसका 25% बन गया 120. कैसे? 25% comes from which fraction? 1/4. 1/4. So 25% of 480 is nothing but 1/4 of 480. यानी किसी नंबर को 25% निकालना है, सिर्फ वो नंबर को 4 से डिवाइड करो. Just divide that number with the 4, you will get 25%. When I divide this with 4, 4 into 1, 4 into 2, 0, 120 हो गया. So this is my 25%. जब इसको 120 कम करो तो क्या होगा? 360 बचता है. Now अभी देखो, on this 360 another X% discount is given and then we get selling price 288. What is this X%? What is this X%? अब ये percentage कितना है? Observe this. Now number is reduced from 360 to 288. इसका मतलब कितना कम हुआ? 72 कम हुआ. Am I right? Number reduced from 360 to 288. It means how much reduced? 72 reduced. 72 reduced out of which number? Out of 360. 72 out of 360. Okay. इसका परसेंटेज निकालना है तो into 100 करना है. Okay. और we can go with the fractions. अभी देखो 36 into 10, 36 into 2. 2 means 1/5. 2/10 is 1/5. So what is 1/5? 20%. बन गया X value 20%. That is my answer. Do we have the option? Yes. Option number A is our final answer. I am repeating this. 480 reduced by 25%. 25% of 480 बन गया 120. अब इसको 120 कम करो, मिल जाएगा 360. अब ये 360 को X% कम करना है, तो कम करने के बाद आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस 288. अभी ये X का वैल्यू क्या है? तो कितना परसेंट कम करना है यहां से यहां तक आने के लिए? तो वैल्यू कितना है? देखो यहां से यहां तक आने के लिए वैल्यू हो गया 72.
तो 72 कम हुआ, तो 72 कहां से कम हुआ? 360 से। 72 out of 360 which is 2 by 10 which is 1 by 5 बन गया 1 by 5 is a 20% and that is my answer. Okay, so let us go to question number 5. Question number 5, what do we have? The successive discounts of 25%, 20% and 10% is equal to single discount of. Okay, 3 successive discounts is equal to single discount of, single discount. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो मैंने सुबह के क्लास में बताया था जब भी 3% का प्रॉब्लम आया, डू नॉट यूज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय फॉर्मूला, गो विद द सक्सेसिव परसेंटेज. ओके, शुरू करो 100 से. 3% है, 25%, 20% एंड 10%. मैंने एक टिप भी दिया था सुबह का क्लास में, क्या था वो? तो जब भी 2 और 3% मिलते हैं, स्टार्ट विद द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है. तो इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड है 25%. पहले 25% कम करो. 25% ऑफ 100 इज 25 ओनली. आई विल रिड्यूस इट बाय 25. आई विल गेट 75. नाउ उसके बाद 20% डिस्काउंट फिर से. इसका 10% होगा 7.5, 20% होगा 15. आई एम रिपीटिंग, इसका 10% 7.5, 20% होगा डबल 7.5 इंटू 2 15. तो इसको फिर से 15 कम करो, मिल गया 60. तो 60 फिर से अनदर 10% डिस्काउंट. तो इसका 10% हुआ 6, तो इसमें 6 कम करो तो मिल गया 54. तो ये है फाइनल वैल्यू. लेकिन हमको क्या चाहिए? ओवरऑल डिस्काउंट, मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितना कम हुआ यहां से यहां तक. यहां से यहां तक कितना कम हुआ? 44 कम हुआ, राइट? सो 44 आउट ऑफ विच वैल्यू? 100. सो डायरेक्ट आंसर 44% डिस्काउंट. डू वी हैव द ऑप्शन? Yes, option number A is my final answer. Just apply successively 25%, 20% and 10%. Okay, so let us go to the next question, please. Next question. So what do we have here? In the next question, the price of the table depreciates every year. Okay, let us continue. What do we have? The price of the table depreciates every year by 20%. If the value of the table after 2 years will be 32,000, then what is the present price of the table? Acha. Guys, we don't know what is the present price of the table. Okay, we don't know what is the present price of the table. Is it 46? Yes. I am sorry Fatima. This is 46 here. This is 46. 46%. Option अब देख लीजिए which option it was. I'm sorry, I changed the question. यहाँ पे आंसर 46 है guys. 100 minus 54, 46 होना चाहिए. I did mistake there. I'm sorry. Okay, अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ. तो क्या बोल रहा है? The price of the table depreciates every year by 20%. Now, after 2 years, the price will be 32,000. Then, what is the present price of the table? तो इसको रिवर्स पूछ रहा है. प्रेजेंट प्राइस ऑफ द टेबल पता नहीं है x. तो हर साल 20% कम होता जाता है. अब फिर से और एक साल 20%. अब 2 साल के बाद प्राइस होगा 32,000. ओके, नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल? तो रिवर्स पूछ रहा है. जब भी रिवर्स पूछता है कैसे करना है? ओरिजिनल प्राइस था x, इसका पहले 20% कम होता है, तो इसका मतलब कितना बचेगा? 80% ऑफ x. तब इसको पकड़ो नया वैल्यू, इसको 100% समझो. तो ये 100% में फिर से 20% कम हुआ. Another 20% is reduced. Okay, so again how much is left out? 80% in this value. I am repeating, original price x, x को 100% समझो. 100% x में 20% कम हुआ, तो कितना बचता है? 80% ऑफ x. अभी ये जो वैल्यू है ना, ये 1 साल के बाद, तो इसको अभी समझो 100% ऑफ दिस वैल्यू. अभी ये 100% में फिर से 20% कम हुआ, फिर से बचेगा 80%. सो ये बन गया 2 साल के बाद प्राइस टोटली. दिस इज इक्वल टू 32,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो सीधा लिखना है
दिस इज 4/5, 80%, 80/100 4/5, तो ये भी 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू 32,000. ओके, 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 इंटू 2 32 और 000. x इक्वल टू 2000 इंटू 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 बन गया 50 और 3 0, तो मिल गया हमारा आंसर 50,000. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2017 एसएससी सब इंस्पेक्टर का पेपर में है ये. ओके, सो यू मस्ट बी डायरेक्टली एबल टू राइट दिस स्टेप. ये स्टेप सीधा लिखना है, ये सब नहीं लिखने का. एग्जाम में क्या लिखना है, सिर्फ ये स्टेप, तो इतना ही लिखना है. इसी में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए. 10 से 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद. तो क्वेश्चन अच्छे से ठीक से पढ़ लेना, तो उसके बाद सिर्फ ए स्टेप लिखना और आंसर निकालना. एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? Everybody, am I clear with this question? Please respond. Please respond in the chat box, guys. Am I clear with this question? Okay. So let us continue. Next question. Question number 7, please. Question number 7. Question number 7, please. Yeah, okay. We got it. What do we have? The population of the city increases at the rate of 5% per annum. If the present population of the city is 3,70,440, its population 3 years ago was. Exactly similar to this question. The population of the town increases at the rate of 5% per annum. At present population is 3,70,440. पॉपुलेशन 3 years ago was. तो क्या बोल रहा है, हर साल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 5% बढ़ता जाता है, हर साल 5%, 5%, 5%. तो आज के दिन पॉपुलेशन दिया हुआ है 3,70,440. तो ये पूछ रहा है 3 साल के पहले पॉपुलेशन कितना होता है. ओके, देखो एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस. तो 3 साल 5%, 5%, 5% कम हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ. तो समझो 3 साल के पहले पॉपुलेशन कितना था पता नहीं, समझो x. तो पहले साल में 5% इंक्रीज होगा, इसको समझो 100%. व्हेन इट इंक्रीजेस बाय 5% इट बिकम्स 105%. इसको डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं 105/100. दिस इज 100% ऑफ x इंक्रीज्ड बाय 5%, सो इट बिकम्स 105%. 105% means 105/100. Okay, now इसके बाद फिर से 5%. Now this entire value increases by 5%, means this entire value becomes 105%. So फिर से 105% इसके लिए, तो ये बन गया 105/100. तो ये 2 साल के बाद पॉपुलेशन. तो फिर से समझो ये पूरा 100% है, तो ये पूरा फिर से 5% बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका 105%. तो इसको डायरेक्टली लिखना है 105/100. So this is the current population, which according to the question is 3,70,440. अभी कैंसिलेशन, ये क्या हो गया, 5 इंटू 21, 5 इंटू 20, तो ये भी 5 इंटू 21, 5 इंटू 20, 5 इंटू 21, 5 इंटू 20. ओके, तो अभी ये तीनों नंबर 7 से कैंसिल होते हैं. 7 इंटू 3, 7 इंटू 5 35, 20 बचा है, 7 इंटू 2 14, 64 बचा है, 7 इंटू 9, 7 इंटू 2 0, फिर से 7 इंटू 3 इधर, तो इसको भी 7 से डिवाइड करो. 7 इंटू 7 49, 39 बचा है, 7 इंटू 5 45, 42 बचा है, 7 इंटू 6 0, फिर से 7 इंटू 3 21, इसको 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 8 0. तभी देखो 3 इंटू 3 9 है, 9 इंटू 12 एंड 0 120. अभी कितना बचा है 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 40. तो फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू न्यूमरेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया और इस तरफ 40 बचा है, तो 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 20 इज 8000, 8000 इंटू 40 दैट विल बी 32 एंड 4 zeros. बन गया 3,20,000 is the population 3 years ago. Do we have the option
3,20,000. Yes, option number C is our final answer. Option number C is our final answer. तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, मैंने जैसे बोला ऐसा ही करना, पूरा एक ही स्टेप में लिखना चाहिए, बाद उसके बाद सिर्फ कैंसिलेशन और कुछ नहीं रहने का. आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम. समझो 3 साल के पहले पॉपुलेशन x है, तो ये 5% बढ़ गया, इट इज इंक्रीज्ड बाय 5%. कंसिडर इट एज 100%. 100% increased by 5%, it becomes 105%, which is 105 by 100 of x. Now this value, consider it as again 100%, some new value. It is increased by 5%. So this becomes now 105% of this. 105%, once again 105 by 100. Now this is the population for 2 years. After 2 years, this is the population. Now consider it as a new number, 100% of some number. Now this is increased by 5% again. So this becomes 105% of this number. 105% means 105 by 100 once again. So this represents the total population after 3 years, which according to the question is equal to 3,70,440. तो बाकी सब cancellation, answer मिल जाएगा 3,20,000, and that must be our final answer. Okay, so let us move on to question number 8, please. Question number 8. तो क्या है? The price of the sugar is decreased by 10%. By what percent can a person increase the consumption so that there is no change in the expenditure? Well, we have solved the similar question in the morning. This is the concept of increase decrease. So till now all the questions were based on successive percentage. देखो इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग इन द मॉर्निंग, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. और दूसरा ये, तो ये है इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 100%, 10%. बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन कैन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर. चलो समझते हैं एक्सपेंडिचर 100. सो वी यूज्ड टू स्पेंड 100 रुपीज ऑन शुगर, ये है एक्सपेंडिचर. अभी अचानक से प्राइस कम हो गया 10%. नाउ व्हेन द price decreases, expenditure also decreases. When price decreases by 10%, expenditure also decreases by 10%. तो बन गया expenditure 90. But what is the question? By what percent he can increase the consumption so that there is no change in expenditure? मतलब अभी जब 10% प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर भी 10% कम हो गया, तो 100 से 90 तक आ गया. लेकिन हमको एक्सपेंडिचर कम नहीं करना है इधर. We don't want to decrease the expenditure. We want to spend the same 100 rupees. तो इसका मतलब क्या करना है? हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करना है. तो कितना परसेंट इंक्रीज करना है, वही है क्वेश्चन हमारा. अब यहां से यहां तक देखो कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ. तो 10 आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 90. तो बन गया 1/9, विच इज 11.11%. सो कंजम्पशन इंक्रीज होना है 11.11%. सीधा आंसर एक स्टेप का. Provided you know the concept. अब किसी को समझ में नहीं आया मैं क्या किया इधर? Guys, this concept I explained in the morning's class. Increase, decrease in percentages basics. तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट उसमें एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा. तो उसे बहुत आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Am I clear with this? Question number 8. Am I clear with this? Everybody confirm in the chat box, guys. Am I clear with the question? Yeah, okay, let us continue. Question number 9, please. Question number 9. Let us see what we have in the question number 9. Yes. What is it? Similar question. The price of the sugar is increased by 17%. A person wants to increase expenditure by 5% only. By approximately what percent should he decrease his consumption? Okay. तो क्या बोल रहा है? The price of sugar is increased by 17%. Okay. But now the person wants to increase his expenditure only by 5%. So it means by what percent he must reduce the consumption? समझो अच्छे से क्वेश्चन को. चलो समझते हैं, पहले हमारा एक्सपेंडिचर था 100.
अभी प्राइस इंक्रीज हो गया कितना 17%, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो पिछला क्वेश्चन में प्राइस कम हुआ इसलिए एक्सपेंडिचर भी कम होता था, तो कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते थे। तो इस बार क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा एक्सपेंडिचर बन गया 117। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 5%। इसको एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% इंक्रीज करना है। तो सिर्फ 5% इंक्रीज करना है तो इसको कंजम्पशन तो कम करना पड़ेगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। जब दाम बढ़ गया एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। When expenditure increased, you don't want to increase your expenditure, तो इसका मतलब कंजम्पशन कम होना चाहिए। तो कितना कम होना, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, he wants to increase his expenditure only by 5%। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था 100, इसको 5% इंक्रीज करने के लिए रेडी है वो। तो इसका मतलब अब उसका एक्सपेंडिचर होगा 105। क्यों, 100 इंक्रीज्ड बाय 5% इंक्रीज करने के लिए तैयार है वो। सो इट मींस द एक्सपेंडिचर शुड बी ओनली 105, लेकिन इधर 117 हो गया। तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन कम होना है। यहां से यहां तक कितना कम करना है, 12। वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 12। एम आई क्लियर? यस, वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 12। 12 आउट ऑफ विच नंबर, 117। 12 आउट ऑफ 117, तो क्या होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 9। अभी क्या बचा, 3 इंटू 9 27, 4/39। अब इसका परसेंटेज निकालना है, थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जब इंटू 100 करते ये क्या हो गया, 400/39। 400/39, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 इंटू 13, 3 इंटू विच वैल्यू, 3 इंटू अगेन 13। ओके, उसको डायरेक्टली कैसे निकालना है वो भी सिखाता हूं मैं, तो पहले ये देख लीजिए। 13 अभी 10 बच गया, 3 इंटू 3.333333। तो अभी क्या बचा है, 133.33 डिवाइडेड बाय 13। 13 इंटू 10 130 पॉइंट, 13 इंटू 10 130। अभी 33 बचा है, 13 इंटू 2 26, तो 10.2। डू वी हैव द ऑप्शन, क्लोजेस्ट वैल्यू इज 10.3, तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, आंसर बन गया 10.3%। दैट इज माय फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको सीधा निकाल सकते हैं, बिना ये सब करना है, सीधा निकालना है। इसको कैसे निकालना है, चलो देखिए। इधर क्या बचा है, 4/39, ठीक है। अब ये देखो 4 इज क्लोज टू व्हाट परसेंट ऑफ दिस वैल्यू, क्लोज टू, इसका 10% क्या है, 3.9। इसमें 10% होता है 3.9, लेकिन ये 10% से थोड़ा ज्यादा है, 3.9 से थोड़ा ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है बस। सो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 10.2 और 10.3%। बस हो गया आंसर डायरेक्टली, अप्रोक्सीमेशन। आई एम रिपीटिंग दिस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 4 इन 39? 39 का 10% है 0.39, सॉरी 3.9। तो ये जो 4 आके 3.9 से थोड़ा बड़ा है, बहुत कम, तो होगा 10 से ऊपर, 10.2 10.3। बस डायरेक्ट आंसर 10.3%, and that must be our final answer. Okay, copy this. We shall continue with the rest of the questions.
Guys, tell me if you are done with the copying. We shall continue. Guys, done. Can we continue? Done copying. Okay guys, let us continue. Next question please. Question number 10. So what do I have in the question number 10? The price of the sugar is increased by 20%. A person wants to increase expenditure by only 8%. By what percent should he decrease his consumption? Very similar to the previous question. देखते हैं. 10th one. Let us assume his expenditure. Expenditure is 100. Price increased by 20%. इसका मतलब expenditure भी increased by 20%. तो expenditure बन गया 120. By what percent he must decrease his consumption? But he wants to increase his expenditure only by 8%. He wants to increase expenditure only by 8%. Original expenditure 100. अब price increase होने के बाद expenditure 120 बन गया. लेकिन इसको increase करना है सिर्फ 8%. 8% more than 100 means he want to increase, make it to only 108. तो यहां से यहां तक कम करना है अभी. Consumption कितना कम करना है? 120 to 108. How much is it reduced? 12. 12 reduced by what? 12 reduced from what value? 120. 12 out of 120. ये बन गया 1 by 10. मतलब 10%. It means he should reduce his consumption by exactly 10%. Very similar to the previous question. Okay. So let us go to the next question. Question number 11 please. Very simple question it was. Let us try a different question. Yeah. Observe this. The income of A and B. The income of A is 24% more than income of B. By what percent the income of B is less than income of A? In the morning I solved this question. This is from the concept of comparison. This is from the concept of comparison. तो मैंने क्या बताया था पिछला वीडियो में आपको? In comparison based problems, always start from the variable which is not compared. Variable which is not compared. Let us see that. Okay. Question number 11. तो क्या है? There are two people A and B. Okay. What is it telling?
The income of A is 24% more than income of B. It means A is compared with B. A is compared with B. Who is not compared? B is not compared here. So start with B. That's what I told. In comparison based problems, always start from variable which is not compared. Okay, I'm repeating. A is 24% more than B. So A is compared with B. Who is not compared? B is not compared. Let us assume B's income as 100. Now according to the question it tells A is a 24% more than B. 24% more than 100 is 124. Now what is the question? By what percent B is less than A? By what value B is less than A? B is less than A by 24. 24 out of which number? 124. 24 less than 124. Now look at the options. They are in fractions. So multiply this with 100. तो क्या होगा? Let us divide this with 4 into 6. 4 into 31. अभी क्या बचा है? 6 into 100, 600. 600 by 31%. That must be our answer. Do you have the option? Yes, option number D is our final answer. Am I clear with this? Pretty simple. Start with B. Let us assume B's income is 100. A 24% more than B means 24% more than 100, 124. Now B is less than A by what percent? That is the question. Now we know that B is less than A by 24. 24 out of 124. To convert into percentage, I multiplied with 100. That is 600 by 31. That is my final answer. Let us go with the next question. Question number 12, please. What do we have? Rahul's salary is 40% less than Rakesh's salary. Deepak's salary is 80% more than Rahul's salary. If Deepak's salary is 34,560, then what is the salary of Rakesh? अच्छा. So SSC MTS का 2018 पेपर में आया था एक क्वेश्चन. तो ये भी फिर से कंपैरिजन बेस्ड वाला क्वेश्चन है. ओके, तो इस बार तो ये भी कंपैरिजन का था, लेकिन ये सिर्फ 2 वेरिएबल का है. तो इस बार ये क्वेश्चन 3 वेरिएबल का है. चलो देखते हैं कैसे करना है इसको. क्वेश्चन नंबर 12. How many people are there? 3 people are there. One is Rahul, another one is Rakesh, and the other guy is Deepak. What did I tell you? In comparison based problem, always start from the variable which is not compared. तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? Rahul's salary is 40% less than Rakesh. Means Rahul is compared with Rakesh. तो इसका कंपैरिजन हो गया. Deepak's salary is 80% more than Rahul's. Deepak's salary is 80% more than Rahul. Deepak का भी कंपैरिजन हो गया. तो किसका बच गया अभी? Rakesh. So start with Rakesh. Okay. Now let us assume Rakesh's salary as X. X का मतलब I can take it as 100% of X. I can consider it as 100% of X. Okay. तो पहला कंपैरिजन में क्या हो रहा है? Rahul's salary is 40% less than Rakesh's salary. Rahul's salary is 40% less than this. 40% less than 100. तो इसका बन गया 60% of X. Rahul's salary is 60% of X. क्योंकि Rahul is 40% less than Rakesh. 40% less than 100. 40% less than 100, 60 बन गया वो, ठीक है. अभी Deepak's salary is 80% more than this. 80% more than this. Do not write 180 now. That is wrong. Deepak's salary is 80% more than Rahul. Means 80% more than 60. It means 60% of plus 60% of X plus 80% of this value. 80% कैसे कैलकुलेट करना है? 10% into 8. इसमें 10% कितना है? 6 into 8, 48. So 48 more than this value. I am repeating. 80% more than this. इसका 80% निकालो पहले. कैसे निकालना है? 10% into 8. इसका 10% है 6. 6 into 8, 48. तो Deepak's salary is 48 more than this. 48 more than this means ये बन गया 108% of X. This is very important step. Okay, I am repeating everything one more time. Listen. Rahul, Rakesh, Deepak. 3 people are there. In the first statement, he told Rahul's salary is
40% more than Rakesh. It means Rahul is already compared. Where do we start from? We start from the person who is not compared. Rahul's salary is 40% less than Rakesh. Rahul is compared now. And he told Deepak's salary is 80% more than Rahul. Deepak is also compared. Who is not compared? Rakesh. So we shall start with Rakesh. तो समझो राकेश का सैलरी है x. x का मतलब 100% ऑफ x. अभी राहुल का सैलरी राकेश से 40% कम था, तो 40% लेस देन 100 क्या हो गया? 60% ऑफ x. अभी कंपैरिजन देखो, दीपक का कंपैरिजन राहुल से हो रहा है. राहुल इज 80% मोर देन, सॉरी, दीपक इज 80% मोर देन राहुल, यानी 80% मोर देन 60. तो ये 60 से 80% ज्यादा है. तो इसका 80% निकालो, क्या होता है पहले? 10% होगा 6. 80% is 10% into 8. 10% is 6. 6 into 8, 48. 48 more than this means 108% of x. 108% of x. Okay, चलो यहां तक ठीक है. अभी क्या बोल रहा है? If Deepak salary is 34,560, then salary of Rakesh is. हमको पता है अभी दीपक का सैलरी. दीपक का सैलरी क्या है? 108% of x. According to this data. According to the question, this salary is equal to 34,560. अब ये कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा x का वैल्यू. तो 108% होगा 108/100 of x. That is equal to 34,560. अभी कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं? तो ये होगा 18 का टेबल में 18 into 6. 18 into 6 is 108. अभी इधर 18 into 1 is 18. तो कितना बचा है अभी? 16. 16 बचा है यहां से. एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड. I'm sorry about that, people. I'm so sorry. Yeah, we are cancelling with what? 18. 18 into 1, 18. अभी कितना बचा है? 16. So 165. इसमें से 165 बचा है. तो we shall take 18 into directly 7. No, 18 into 8. 18 into. We can take 18 into 9. When I take 18 into 9, which is 162. अभी 3 बच गया इधर. 36. 18 into 2. अभी 0. फिर से 6 से डिवाइड कर सकते हैं. 6 into 3, 6 into 2, 0. तो x का वैल्यू मिल गया 100 into 320, that is 320 and 00, 32,000. ये है x वैल्यू. लेकिन हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में? व्हाट इज राकेश सैलरी? राकेश सैलरी है 100% ऑफ x. इसका मतलब x ही है. तो x का वैल्यू क्या मिला इधर? 32,000. सो दिस इज द सैलरी ऑफ राकेश. आई एम रिपीटिंग. आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. तो हमको पता है दीपक का सैलरी 108% ऑफ x. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दीपक का सैलरी 34,560. अब इन दोनों को इक्वेट करना है. जब इक्वेट करके कैंसिल करते हैं x का वैल्यू मिल जाएगा. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है राकेश का सैलरी. राकेश का सैलरी है 100% ऑफ x. इसका मतलब x ही है. सो दिस इज x. x इज इक्वल टू 32,000. दैट मस्ट बी सैलरी ऑफ राकेश एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर. ओके, सो लेट अस गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज. Let us see question number 13. What do we have? In a class of 45 students, 40% are girls and remaining are the boys. The average marks of the girls is 64 and that of the boys is 60. What is the average marks of the whole class? अच्छा, ठीक है. तो क्या बोल रहा है? The average marks in a class of 45 students. पहले total class में कितने हैं? 45 है. In that 40% are girls. So girls are 40%. Now remaining will be boys. Observe. 40% of what? 40% of total students, that is 5. तो 40% कैसे निकालना है? 10% into 5. इसका 10% into 4. I'm sorry. 10% into 4. इसका 10% है 4.5. Into 4 बन गया 18. This is number of girls. I'm repeating. 10% of 45. 10% of, sorry, 40% of 45. कैसे कैलकुलेट करना है? 10% into 4. इसका 10% है 4.5. बस into 4 करो. 4.5 into 4 हो गया 18.
अब फिर से बॉयज, बाकी लोग, तो आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 18 are girls. It means remaining 27 students must be boys. Okay. Now what is he asking? The average marks of the girls is 64. Average marks of the girls. Average marks of the girls is 64. And that of the boys is 60. It means average marks of boys is 60. Okay. What is the average marks of the whole class? Average marks of the whole class means total marks of all the students divided by total number of students. अभी total marks of all the students, पहले total marks of girls निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? Number of girls into their average. Total marks of girls is number of girls into their average, that is 18 into 64. And total marks of boys, that is total number of boys into their average, that is 60. तब ये बन गया total marks, marks of girls, marks of boys. So this is the total marks of class divided by total number of students. कितने? 45. If I calculate, we should get the average of the class. Let us see. तो पहले करना है 18 into 64. तो क्या करना है? 1080 plus 72. 18 into 64, 1080 plus 72, 1152. ये हो गया 1152 प्लस इसका. तो दूसरी बार चलो ठीक है लिख लेते हैं. क्या हुआ इसका? 120 plus 42, 162, एक 0. ओके. अब ये टोटल मिला के कितना हुआ देखो. 1000, 1000, 2000, सॉरी 1100, 1600 हो गया 2700, 2772. ये दोनों मिला के 2772. ये हो गया टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास. तो क्या करना है? 2772 डिवाइडेड बाई, इधर क्या है नीचे 45, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये जाएगा 9 से. 9 इंटू 5 45. तो ये भी जाएगा 9 से. 9 इंटू 3 27, 0, 9 इंटू 8, 308 बाई 5. तो क्या कर सकते हैं फिर से? 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 1 5, पॉइंट 3 बचा है 6, 61.6. डू वी हैव द ऑप्शन? डू वी हैव द ऑप्शन? यस, 61.6 इज माई फाइनल आंसर. आई एम रिपीटिंग. क्या कर रहा हूं मैं इधर? तो पहले टोटल स्टूडेंट्स है 45, उनमें से 40% सिर्फ गर्ल्स है. 40% ऑफ 45 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, विच इज 18. अब 45 स्टूडेंट्स में 18 गर्ल्स है, इसका मतलब बाकी 27 स्टूडेंट्स बॉयज होंगे. तो एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स दिया है 64, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज दिया है 60. So what do we want? Average marks of the total class. How do we calculate average marks of the total class? Total marks of all the students divided by total number of students. अब total marks of all the students कैसे निकालना है? Total marks of the girls, total marks of the boys. Total marks of the girls, how do we do that? 18 into 64. Total marks of boys, 27 into 60. डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स 45. बाकी सब कैलकुलेशन. आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए. 18 इंटू 64, 27 इंटू 60, ये सब बिना पेन कैलकुलेट करना है. वो सब कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको स्पीड मैथ्स वीडियो में बता दिया. ये सारे ट्रिक्स आप वो वीडियो देखा ना है आप, कोई बात नहीं. हमारा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, SSC CGL/CHL बोल के एक प्लेलिस्ट मिलेगा. ओके. तो वो प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 दोनों सिर्फ स्पीड मैथ्स के लिए बना हुआ था. दोनों क्लासेस. ओके. प्लीज वॉच देम so that you can improve your speed in calculating people, be it addition, multiplication, subtraction, सब कुछ explain किया था मैं वो वीडियोस में. ठीक है. So let us continue with the next question. Question number 13 please. 14. Question number 14. What do we have? In an examination, 48% candidates passed in the science and 56% failed in the mathematics. If 32% failed in both the subjects, then what percent passed in both the subjects? Okay. What is it telling? In an examination, 48% of the candidates passed in the science. Now 56% of failed. Copy this guys, copy this and then we shall continue people. Please copy these questions 3 and then we shall continue.
Give me some 3 minutes break, guys. I'll be starting in another 3 minutes, okay? You can go through the question and you can try this question. If you get it, please post the answer in the chat, people. Meanwhile, just give me 3 minutes time. I will be back, okay?
Okay guys, let us continue. Nobody answered. No one got the answer guys. It's a pretty simple question. चलो देखते हैं कैसे करना है इसको. तो क्या है क्वेश्चन में? In an examination, 48% of the candidates passed in the science and 56% failed in mathematics. If 32% failed in both the subjects, then what percent passed in both subjects? What percent passed in both the subjects? ठीक है यार, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेट थ्योरी और परसेंटेजेस है. ओके, तो सिंपल सेट वेन डायग्राम से ये निकल जाएगा. एक साइंस का है, दूसरा मैथमेटिक्स का है. सही है, चलो देखते हैं क्या है इधर. सो लेट मी कॉल दिस इज फॉर साइंस, दिस इज फॉर मैथमेटिक्स. तो मैं निकालता हूं सिर्फ फेल्ड स्टूडेंट्स का भी. ओके, लेट अस कैलकुलेट ओनली फॉर द फेल्ड स्टूडेंट्स. तो क्या बोल रहा है? 48% कैंडिडेट्स पास्ड इन साइंस. गाइस, आउट ऑफ 100% 48% पास्ड इन साइंस. इसका मतलब फेल्ड कितने होंगे? 52% फेल्ड इन साइंस. आई एम टेकिंग ओनली अबाउट फेल्ड, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फेल्ड. ओके, टोटल 100% में 48% पास्ड इन साइंस, इसका मतलब 52% फेल्ड इन साइंस. अभी मैथमेटिक्स का देखो, 56% फेल्ड इन मैथमेटिक्स. चलो वो भी वही दे दिया, 56% failed in mathematics and 32% failed in both the subjects. 32%, ये intersection का जो part है ये both the subjects का है. both the subjects, in both the subjects 32% students failed. ठीक है, चलो यार टोटल 52% है. ये साइंस सर्कल का टोटल वैल्यू है 52%. उसमें से 32% यहीं पे है. इंटरसेक्शन रीजन में 32% है. आउट ऑफ 52, 32 आर देयर, मींस रिमेनिंग 20% मस्ट बी हियर. Now, who are this 20%? 20% students failed only in science is this. Only in science. Students who failed in only in science is 20%. The students who failed both in science and maths is 32. Okay, दोनों मिला के 52% साइंस का हो गया. अभी पूरा मैथमेटिक्स का टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स इज 56%. आउट ऑफ दिस 32% आर हियर. अभी कितने बचे? Out of 56%, 32% are here. Means remaining 24% failed in only mathematics. Now with this we can tell totally what percent failed. 20 plus 32, 52% plus 24. 52 plus 24, 76%. तो total failed हो गया 76%. Total failed हो गया 76%. Am I right? Yes. 20 plus 32 plus 24. अब सारे स्टूडेंट्स में 76% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ईदर ओनली साइंस और इन मैथमेटिक्स और इन बोथ द सब्जेक्ट्स. इट मीन्स remaining out of 100%, 76% students are failed candidates. It means remaining 24% of students passed in both the subjects. So the number of students who passed in both the subjects are 24%. Do we have the option? Yes, option number B. That must be our final answer. Okay, I'm repeating this question one more time. Listen to this. In science, totally 48% failed, 48% passed. It means 52% failed. In mathematics, totally 56% failed. And 32% candidates failed in both the subjects. Now total science value is 52. In that, in intersection there are 32%, remaining 20% are here. These are students failed in only science. Total mathematics is 56. In that 32% are here. Remaining is 24%. So these are the students who failed in only mathematics. Only mathematics. अब टोटली कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए? 20% प्लस 32% प्लस 24%, ऑल टुगेदर 76% स्टूडेंट्स फेल्ड इन वन और द अदर सब्जेक्ट्स और इन द बोथ द सब्जेक्ट्स. तो इसका मतलब टोटली 76% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं. तो 100% में 76% निकाल दो, अभी कितना बचेंगे? 24%. These 24% passed in both the subjects and that should be our answer. So SSC सब इंस्पेक्टर 2018 पेपर का क्वेश्चन है ये. सो आंसर हो गया 24%, ऑप्शन नंबर बी. Okay, so let us go to next question please. Question number 15.
What do we have in question number 15? Rakesh got 273 marks in an examination and scored 5% more than the passing percent. If Lokesh got 312 marks, then by what percent above the passing marks did he pass the examination? तो क्या बोल रहा है? Rakesh scored 273 marks, which is 5% more than passing percentage. Now Lokesh scored 312. The question is, by what percent above the passing mark did he pass the examination? It means he's asking by what percent above the passing marks Lokesh passed the exam. देखते हैं इसको कैसे करना है. तो ये है क्वेश्चन नंबर 15. यार पहले समझते हैं पासिंग मार्क्स होगा P%. ओके, पासिंग मार्क्स होगा P%. P or P. Let us say passing marks is P. Now Rakesh scored 273 and 5% more than passing marks. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, this is 5% more than passing marks. तो अभी पासिंग मार्क्स को 100% पकड़ो. P is nothing but 100% of P. उससे 5% ज्यादा, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 105% of P. And that is equal to 273. I am repeating this step one more time. Rakesh scored 273 marks, that is 5% more than the passing marks. Let us assume passing marks as P. तो उसको समझ सकते हैं 100% of P. तो ये जो 273 है, this is 5% more than P. इसका मतलब this is 105% of P. तब इसके साथ हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा. अभी देखते हैं क्या होगा. तो ये हो गया 105/100 of P, that equal to 273. कैंसिलेशन करना है तो क्या करेंगे? तो ये जाएगा 7 से, 7 into 15. ओके, ये 7 into 3 21, 7 into 9 63. ये जाएगा 3 से, 3 into 5 3 into 13. ये बन गया 5 into 1 5 into 20. अब पासिंग मार्क्स मिल गए हमको 20 into 13, that will be 260. नो ये है पासिंग मार्क्स. लेकिन इधर खत्म नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन अभी. तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ही इज आस्किंग Lokesh scored 312. He scored 312. By what percent above the pass marks? By what percent above the pass marks he passed the examination? Passing marks are 260. Lokesh scored 312. By what percent he scored more than passing marks? ठीक है. By what percent more than this? Now this is more than 260 by what value? This is more than 260 by exactly 52. 52 more than what? 52 more than 260. That is 52 out of 260. तो क्या हुआ? 26 into 10, 26 into 2. 2 by 10 का मतलब 1 by 5. 1 by 5 is a 20%. It means Lokesh scored 20% more than the passing marks. Do we have the option? Yes, option number D. Option number D is a 20% and that must be our final answer. Now फिर से repeat कर रहा हूँ ये question को. पहला स्टेप क्या है? Rakesh scored 273 which is 5% more than passing marks. समझो passing marks है P, उसको समझ सकते हैं 100% of P. अब ये जो 273 है ये इससे 5% ज्यादा है, तो 5% ज्यादा इसका मतलब ये हो गया 105% of P. So when we cancel the terms here, I'll get P value as 260. अब मुझे पता है पासिंग मार्क्स 260 है, लेकिन लोकेश ने स्कोर किया 312. तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो लोकेश का मार्क्स पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट ज्यादा है? पासिंग मार्क्स 260 है, लोकेश का मार्क्स है 312. तो ये इससे कभी कितना ज्यादा है? 52 ज्यादा है. तो 52 more than what? 52 more than 260. 52 out of 260 मिलेगा 1 by 5, that is 20%, and that must be our final answer. Okay, a slightly tricky part. If you don't know this one, then it will be difficult to solve. Okay, चलो देखते हैं अगली question. Next question please. Question number 16. What do we have? A person spends 25% of his annual income on house rent, 15% on education of children, and 45% on other items. If he saves 14,000 annually, 14,400 annually, then the person's total income is. बहुत simple question है, based on income and spending. Okay,
देखते हैं कैसे करना है इसको। तो क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, 25% खर्च हो गया। इसका इनकम पता है क्या? पता नहीं, चलो ठीक है, उसका समझते हैं आई। ओके, तो उसमें से 25% हाउस रेंट के लिए खर्च किया और spend 15% on education on children and another 45% on other items. Totally, how much is spent? 25% plus 15% plus 45%. 25 plus 15 हो गया 40, 40 plus 45 हो गया 85% खर्च कर चुका है ऑलरेडी इसने। Out of his income, I can consider it as 100% of income. He spent 85%. It means he'll be left with another 15% of his income. He'll be left with 15% of his income. What is it telling? If he says 14,400 annually, then the person total income is, चलो, he spent 85%. इसका मतलब बाकी 15% he is saving. He is saving remaining 15%, and according to the question, he is saving 14,400. This must be equal to this is 15% of his income. So let us do this. What do we get? This is 15 by 100 of income is equal to 14,400. तो क्या हो रहा है? कैंसिल करो। 15 इंटू 9 हो गया 135। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसिलेशन के लिए, मैं पहले क्लास से बता रहा हूं आपको। सो हुआ तो हर दिन 12 to 20 तक टेबल्स हर दिन 2 to 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, तो तभी आपका कैंसिलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 9 हो गया 135, तो 135 हो गया, अभी कितना बचा है? 90 बचा है इधर। सो 15 इंटू 6 90 और एक जीरो है, 960 हो गया, तो इनकम हो गया I इज इक्वल टू 960 100, 960 इंटू 100 96000, 96,000 इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है, यस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माई आंसर, 96,000। ओके, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझो। टोटली 85% उसने खर्च किया, इसका मतलब 15% उसने सेव किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कितना सेव किया? 14,400। तो ये 15% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 14,400। कैंसिल करो, मिल जाएगा आपका आई वैल्यू 96,000। ओके, सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 40% of a number is a 290, then what is the number which is 20% more than the initial number? Okay, तो क्या बोल रहा है? 40% of a number is a 290. 40% of a number, which number we do not know. चलो समझते हैं, हमारा नंबर है x, तो ये x का 40% क्या हो रहा है? 40% of number is a 290. 40% of the number is a 290. Okay, so let us first calculate what is this number x. 40% is 40 by 100 or directly 2 by 5. 2 by 5 of x equal to 290. ओके, कैंसिल करो, 2 इंटू 145 हो गया 290। तो x का वैल्यू क्या होता है? 5 इंटू 145, 500, 725। तो ये हो गया x, इनिशियल नंबर ये है। ओके, इनिशियल नंबर मिल गया। सो व्हाट इज ही आस्किंग इन द क्वेश्चन? ही इज आस्किंग व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन इनिशियल नंबर? 20% मोर देन दिस इनिशियल नंबर है 720। अभी इसको 20% बढ़ाओ, इसका 10% है 72.5, 10% होगा 72.5, 20% होगा 72.5 इंटू 10, तो हो गया 145। तो बढ़ा दो इसको, 145 जब मैं बढ़ाता हूं ये हो गया 870। तो ये है 20 नंबर, this is the number which is 20% more than the initial number. Do we have the option? Yes, option number A, that is our final answer. बहुत simple question है, I am repeating this. What is happening? He told 40% of some number, I don't know which one, 40% of some number is 290. So when I do the calculation, I'll get that number as 725. So this is the initial number 725. He is asking what is the number which is 20% more than the initial number. तो इनिशियल नंबर को 20% बढ़ाओ, आपको मिल जाएगा नया नंबर 870। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कब का है? 2017 सब इंस्पेक्टर का पेपर है फिर से। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है इधर? आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिड्यूसिंग 15% from the remainder 1428 is left, what is the initial number? तो क्या बोल रहा है? एक नंबर है, इनिशियल नंबर क्या है पता नहीं हमको, समझते x है।
अभी ये x को 2 बार कम किया हुआ है, एक बार 60%, फिर से जो भी रिमाइंडिंग रहता है उसमें से कितना कम किया, 15%। तो करने के बाद एट लास्ट नंबर मिलेगा 1428। सो व्हाट इज द इनिशियल नंबर? तो इसको तो रिवर्स पूछ रहा है, रिवर्स कैसे करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स कर चुके हैं ऑलरेडी। ओरिजिनल नंबर है x, जब इसका 60% कम होता है इसमें कितना बचता है, 40%। अब इसको पकड़ो नया नंबर, समझो ये पूरा नया नंबर है 100%, अब इसमें से 15% कम किया तो इसमें कितना बचता है, 85%। 85% इसमें बचता है। तो तब आके एक नया नंबर मिला है, दैट इज इक्वल टू 14। चेक करो, मिल जाएगा हमारा x वैल्यू। क्या करना है, 85% हो गया 85/100, 40% हो गया 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 1428। अभी कैंसिलेशन, ये 17 टेबल में जाएगा, 17 इंटू 5 75, और 8 हो गया 136। अभी 68 बचा है, 17 इंटू 4 84। अभी क्या है, 5 इंटू 2 10, ये 10 और एक 0 खत्म। तो अभी कितना है इधर, 84 इंटू 10 इंटू 5 50। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो 5 इंटू 80 400 प्लस 20 420, 420 और extra 0 4200, that is our original number. So what is he asking, what is the initial number? Do we have 4200? Yes, that must be our final answer. I am repeating this question. क्या चल रहा है इधर, तो एक नंबर को पहले 60% कम किया, तो उसमें जो भी बचा है वो नंबर को फिर से 15% कम किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद नंबर बचाए टोटली 1428। ये जो इनिशियल नंबर क्या है वही पूछ रहा है। तो हमारा इनिशियल नंबर है x, जब उसमें से 60% कम करता है तो उसमें कितना बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट ओवर, 40% ऑफ x, बिकॉज वी रिड्यूस्ड इट बाय 60%। नाउ अंडरस्टैंड दिस एज न्यू नंबर। इन दिस न्यू नंबर अनदर 15% इज लेफ्ट आउट, अनदर 15% इज reduced। तो इसको समझो, दिस इज कंप्लीटली 100% न्यू नंबर, दिस इज reduced बाय 15%, क्या बचता है 85%। ओके 85%, तो 85%, तो ये है पूरा नया नंबर है। तो ये नया नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1428, इक्वेटेड एंड सॉल्व रेस्ट ऑफ इट। तो you'll get x value as 4200। that is the end of our 18th question। ये है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ये पेपर में। ओके, आई वांट यू टू ट्राई देम, आई वांट यू टू ट्राई देम। सो वी हैव सीन different types of the problems, people. Out of 20 questions, we solved 18 questions. I will leave it to you. Can you put the in description, please put the Telegram channel link there. Kanak. Yeah. So out of 20 questions, people, 18 questions are solved. Okay. Remaining 2 questions, I will leave them for your practice. Now, we have successfully finished percentages second class. तो खत्म हो गया क्या पूरा percentages? नहीं है. So you will be having another class on percentages tomorrow. So tomorrow I'll tell you the timing in the Telegram channel. Okay, so check in the in our description link, people. Here in the description you will get the Telegram link also there. Okay, if you guys are not there in our Telegram channel, please you can join that so that you'll get all the updates in advance. Okay, and ये सारे questions का आपको PDF चाहिए, मैंने already Telegram channel में डाल दिया. Okay, you will find it in Telegram channel. If not, even in the video, this video, if you check in the description, you will find the questions link. You can download the PDF of all these questions. Okay, इसके अलावा we will be solving few more questions tomorrow. Okay, एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट फिर से उसका भी वीडियो एनालिसिस देंगे कल का क्लास में। ओके, तो कल आफ्टरनून होगा दूसरा क्लास, उस क्लास में फिर से परसेंटेजेस का और कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल से नया टॉपिक शुरू होगा, कल शाम को प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये हफ्ते में हमको खत्म करना है प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद मंडे से हम लोग रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी शुरू करने वाले हैं। Okay, so do not miss, guys. So please watch, keep continuing all the classes. Do not make something like, आज क्लास मिस हो गया तो कल देखेंगे, ऐसा मत करो। You will pile up the videos. कभी खत्म कर पाओगे नहीं आप। तो इसीलिए keep watching every day. Live class देखना, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। So that is the reason, guys, we are making the live classes here rather than giving the recorded videos.
Okay, so that's all for the day, people. If you haven't liked the video, so if you like our teaching, please like the video and subscribe to our YouTube channel as well. Okay, so and please tell your friends about our channel so that they can also get benefited from these classes. So that is all for the day, people. I'm Abhilash Varma signing off. Thank you so much. Entry.